You are on mute. Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Being organization to Yog Vasishta knowledge session, evening knowledge sessions in multilingual language, Marathi, Hindi, English. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वशिष्ठ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूँ। तो रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं और गुरु वंदना के साथ आज के सत्र हम लोग शुरुआत करेंगे। So let us all close our eyes. अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन करें। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना करें, अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति पे तैयार होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सान्निध्य महसूस करें और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। फिर से एक बार अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का आज के 12वें सत्र में स्वागत है। Once again, I welcome all of you, all the Zoom participants, all our YouTube viewers, and all our Facebook viewers to the day 12th session of this yoga. So let's begin. Yesterday, we have read the Marathi book, what we are referring, Yoga Shishta, Subodh Yoga Shishta, and we have finished our second chapter, Moksha Vyavahar Prakaran. So in that we saw how important it is to understand this thing in totality, how important it is to do our efforts, how important it is to
understand those 4 pillars of attaining liberation. So we were discussing yesterday, we discussed about those 4 pillars of moksha. So which are those 4 pillars of moksha? So the first thing that we saw is the second thing that we saw is basically the vichara. Then the third thing that we need to understand is that the santosha, the trupti. And the fourth thing is the sadhu sangati. So these are the 4 pillars that we saw. So today we will discuss about the second pillar. Second dwarpal is what is said here of this moksha, how to attain this moksha. So when we think about attaining this moksha, our thoughts are very, very important. Vichara is very important. So if we observe that any of our actions initiates at the level of mind, is through the thoughts that comes to us. So it is very, very important for us to have that intellect, have that viveka, jagrut in us, so that your intellect is purified. Means शुद्ध बुद्धि जिसको कहा जाता है, शुद्ध बुद्धि या शुद्ध वासनाएं जिसको कहा जाता है. To have those kind of thoughts at that level, it is very necessary to do the purification process. Now, how to do that purification process? So that purification process also happens through those thoughts. बुद्धि की जो शुद्धि होती है, that also happens through those thoughts. So what are those thoughts? So there are 5 types of thoughts that are being said here. The first type of thought, that is what is artha, anartha, anubandha. So we need to really understand where the knowledge exists. Does the knowledge exist in this outly worldly matter? It is called as Vishaya, the one which is our Panchendriya, and the attractions, that the desires that it generates through temporary pleasure experiences of those Indriya, that are called Vishaya. So understanding this, that this Vishaya is going to take you towards the something which will put you in misery, something which will put you in trouble. Now, in the contrary, following our shastras, the knowledge, the Guru Vachan, all those things that can lead us to make us do our Purushartha, that is our daily routine and our 100% karma. 100% prayatna, doing our 100% karma. So understanding the difference between two, having this kind of viveka, having this kind of thoughts and vichara, is the first type of vichara, that is first type of thoughts that is being said here. Then the next type of thoughts here told is asara vichara. Means what? That this body at the time of birth or at the time of when it leaves, this body is not permanent in nature. It is going to finish. It is nashivanta. This, and even the pleasures that this body derives out of all this worldly matters, the external bahirmukh jo hota hai, even that is also very, very temporary in nature. Pondering upon this and through experience, understand this is a second type of thought that needs to come here. Then the third type of thought explained here is a heya upadeya vichar. Upadeya vichar. So what is that? So who am I? What is the purpose of my life? If I want to attain moksha, then what is the path that I need to adopt? Should I go for the bhakti marga, or should I go for the karma marga, or should I go for the
the third one is Jnana Marga. No, we are aware that this is Karma Yoga, Bhakti Yoga, and the last one is Jnana Yoga. So which thing should I choose? What is it that whether alone will give me the moksha or the liberation, or do I need to go and do the combination of that? Such kind of thinking, such kind of thoughts, such kind of thought process has to be initiated. And then you have to, what is good for us, what is not good for us, that is something we need to also ponder for. That is also very important. That is a third type of vichara. Then the fourth type of vichara, what needs to happen during this process is what is praman and tatparya vichara. So once you have probably decided that, okay, I would like to follow the Jnana Marga, means the path of knowledge. Then which knowledge? What is it that I should trust upon? So it says that there are so many types of knowledge that has been explained. For example, Kapil Mahamuni gave us the Sankhya Shastra or Sankhya Darshana. Patanjali Rishi gave us the Ashtanga Yoga Shastra. Gautam Kanad gave us the Vaisheshika Darshan. Which one is good? Which one should I take as a proof? Which one should I believe into? And then what are the influences that are there from it? Which one should I believe? Or should I believe in the Upanishad, which is told in Shruti? So like this kind of thoughts process also goes, what is Praman and Tatparya Vichara. So this thought process also you got to go through. And then choose one of them and then follow it. Like Tattva Abhyasa. Then the fifth type of vichara that comes here is the Atma Tattva Vichara. Atma Tattva Pariksha Vichara means whatever this knowledge that we hear and read from all these things, we have to go through it and we have to experience it ourselves. That is the first pariksha, that for every thought we need to apply this filters. Then we also need to apply whenever that kind of thought came, or whenever we read something or somebody told us something. Is it in line with the Shastra or not? Is it in line with, even if it is written in the Shastra's book, is it in line with the Guru Vachana or not? Or is it in line with my own experience? Whatever the things I am going through, is it applicable to me or not? This kind of thought process is also very, very important when thought comes to me. It is being said that these are the pearls that we need to choose. Those thoughts also will be transformed as a pearls when we execute them. So it is very, very important for us to choose which one to keep and which one to let go. So this is also very, very important process. Now let us look at it in a kind of one more viewpoint. Why all these things are said here? Why we need to go through all these things, thought process? Because it is being said that it will also come in the Utpatti Prakarana, that it all starts with the one who is that Paramatma or Chetana, that consciousness. No, he just haven't thought that I am something, I am somebody. That, and then he starts searching for the answer for that. Koham, koham, koham. So you see that it all starts with the thought. So that is the reason it is very, very important for us to understand this thought process, understand what kind of thought comes to us, analyze those thoughts, then take an appropriate action based on thought. Because even action, every action first is executed in your mind in the form of thought itself. Practical bodily action happens later, but first of all it comes as a thought in your mind, and there what is you execute, and then it comes translate into your action. So that is the importance of thoughts. So now thought, how does those thought comes? Do they ask us and come? No, they do not ask us, they just come. But then sticking to it or not is something up to us, or we just want to let go is something up to us. Now let us see the practical implication of this. Suppose if you are a student and you have already decided, you already taken an admission, you are already into engineering or a doctorate, or you are pursuing your any other stream profession. So now, once your goal is already fixed, you got to keep on working on the thoughts which
supports your goal. Suppose your goal is moksha, you need to keep on walking on the similar path. Your action should be oriented towards the same. If you are a student, you are studying, you want to attain something, you want to complete your, all your thoughts needs to be same. So while doing so, if other thought comes, some other thought comes, suppose you are studying, your time is to study, and that point of time some other thought comes, oh let me go and do this, let me go and do that. We should be in a we should have that viveka, in place, that intellect in place, that buddhi in place, that no, this thought has come, it's a random thought, but right now my time is to be study. No, I have to focus on my study. So I should be able to apply that viveka and filter it out, that this is not important right now, ignore it, I'll address it sometime later. That is very, very important. So thoughts have that thing in place, no? So those thoughts are also very, very important, even when we want to attain this moksha. So even to attain that, this thought process, that is very important, that who am I, what is the purpose of my life, why am I here, whatever the mundane daily routine life activities that I keep on doing, no, am I here for that really? Have I not done this n number of times? No, such thinking, such rational thinking is very, very important. So what that thinking also is because of the vichara. That thinking is also because of the thoughts. So that is the next मोक्ष के द्वारपाल में, that is the next thing that has been told to us. अब इसका थोड़ा हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं कि हम लोग अभी मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण के दूसरे सत्र में है, दूसरे चैप्टर में है। उसमें हमने देखा कि किस तरह से अपना पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस पुरुषार्थ को फिर किस तरह से करें, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करें। तो बोलते इट ऑल, वो यह सब कुछ शुरू होता है अपने विचारों से। जो अपने मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए हैं, उसमें जो अपना विचार होता है, वो विचारों से यह सब कुछ वहां पे शुरुआत होते ही दिखती है। तो उसी विचारों के लिए यहाँ पे 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के विचार यहाँ पे बताए गए। तो कैसे बोलते हैं कि जो विचार होते हैं, जो भी हम लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, वहां से अपने को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बेसिस से हमें वो विचारों की प्राप्ति होती है। लेकिन कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के विचार हमें करना बहुत जरूरी होता है। तो पहला बताया कि अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है, अनुबंध क्या है। इस तरह के जो होते हैं कि कौन सा विचार मुझे सही मार्ग पे लेके जाएगा, कौन सा विचार मुझे मोक्ष के मार्ग पे लेके जाएगा। तो यह समझना आवश्यक है कि ये जो विचार आते हैं, जो अपने विषयों से, विषय माने अपने जो पंचेंद्रिय होते हैं, और पंचेंद्रिय जो बहिर्मुख होते हैं, जो बाहरी सुख की तरफ भागते हैं, क्या उससे मिलने वाला सुख यह परमानेंट है या नहीं परमानेंट है, या टेम्पररी है। इस प्रकार के विचार आके उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना यह बहुत आवश्यक होता है। टाइम टू टाइम इसे देखना बहुत आवश्यक होता है। देन किसी भी चीज का बोलते हैं सारा सार विचार करना। हम लोग बोलते ही है ना कि अरे सारा सार विचार केला कि नहीं, ऐसा ना, इसको ठीक तरह से तुमने जांचा कि नहीं, ऐसा हैव यू आपका एक फिल्टर सॉल्वर। सो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो विचार है, जो कि मेरा यह देह है, क्या यह देह परमानेंट है, क्या मैं देह हूँ क्या सिर्फ, इस तरह का विचार। तो ये शरीर है, ये तो नाशीवंत है, इस चीज को भी अनुभव करके समझ लेना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सेकंड टाइप ऑफ विचार यहाँ पे बताया गया। फिर बोलते हैं हे उपादेय करके विचार। तो बोलते कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन से साधन उत्पन्न होते हैं, मुझे किस तरह का साधन, माने कर्म योग फॉलो करना चाहिए, या मुझे भक्ति योग फॉलो करना चाहिए, मुझे ज्ञान योग फॉलो करना चाहिए, या फिर इसमें से कोई एक या कॉम्बिनेशन, या कोई सिर्फ एक, किसको फॉलो करना चाहिए। इस तरह का जो एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस भी मन में होना जरूरी है अपनी इसको डिसाइड करने के लिए। तो ये देखो, हम लोग जब अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं या ग्रेजुएशन में जाना होता है, तो कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ, या मुझे इंजीनियरिंग जाना है, डॉक्टरेट जाना है, देखो इस तरह का जो विचार अलग अलग अपने पास ऑप्शंस होते हैं, उसमें से सही का चुनाव करना
उसका एनालिसिस करना, इस प्रकार की विचार प्रक्रिया से हमें गुजरना चाहिए और गुजरना पड़ता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम थिंग हैपेंस विद द स्पिरिचुअल पाथ आल्सो, कि मुझे किस मार्ग पे चलना चाहिए, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, कौन सा मार्ग मेरे को लेके जाएगा। इस तरह का विचार भी यहाँ पे तीसरे प्रकार का विचार कहा गया है। अब ये कौन सा करना चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट चारों पांचों विचार पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार विचार होते हैं। देन चौथा प्रकार का जो विचार होता है वो कि जो कुछ भी मुझे किसी ने कुछ बताया या मैंने कुछ पढ़ा, अलग अलग जो होते हैं, उसका प्रमाण क्या है कि वो सही है या गलत है, किसके आधार पे मैं वो कहूँ कि वो जो आई है वो सिचुएशन या जो विचार आया है वो सही है या गलत है, किस चीज को मैं प्रमाण मानूं। बिकॉज कहते हैं कि अलग अलग जो अपने संत या ऋषि मुनि हो गए हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के ये ओपिनियंस अलग अलग माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो मैं किसको माध्यम को प्रमाण मानूं। तो कपिल महामुनि का जो सांख्य शास्त्र या सांख्य दर्शन है उसको प्रमाण मानूं, या फिर मैं पतंजलि के जो अष्टांग योग शास्त्र बताया मैं उसको प्रमाण मानूं, या फिर जो अपने गौतम और कणाद ऋषि थे उन्होंने जो वैशेषिक दर्शन का जो ज्ञान दिया उसको प्रमाण मानूं, या फिर मैं जो उपनिषद जो बताया गया श्रुति में उसको प्रमाण मानूं, मैं किसको प्रमाण मानूं। इस तरह का विचार विनिमय परामर्श भी अपने अंदर होना चाहिए। ये हो गया चौथे प्रकार का विचार। और जो पांचवें प्रकार का यहाँ पे विचार बताया गया है दैट इज कहते हैं उसको आत्म तत्व परीक्षा विचार। तो बोलते किसी ने भी कुछ भी बताया, कहीं से भी कुछ पढ़ा, लेकिन जब तक वो अपने अंदर की जो अपने अनुभव है वो अनुभव में उस वक्त फिट बैठता है क्या उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, उन क्षणों के लिए, तो फिर वो विचार ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक है। यहाँ पे बताते बताते बोलते कि वो जो विचार है वो विचार अपने गुरु जो उन्हें उपदेश जो गुरु वचन है उसके साथ सुसंगत है क्या, तो वो परीक्षा भी उस विचारों के ऊपर हमने वो फिल्टर भी लगाने चाहिए। तो इस तरह से बोलते कि इस तरह से मोती जो आते हैं विचार, उनमें से जो मोती है, मोती स्वरूप विचार जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, उन्हीं की पारख करना, उसको अपने विवेक सत्सद विवेक बुद्धि से उसकी पारख करना और फिर उसको चूज करके उसके ऊपर एक्शन लेना। ये 5 प्रकार के विचार भी आवश्यक होते हैं। Now let us understand the implication of this 5 thought process, whatever has been said here. How does that apply in our day-to-day routine life, and how can I make the full potential, how can I unleash the full potential of this life using this thought process? So see, understand this context. So here at one point of place, it is been explained that even if some Brahmaji comes and tells you something, no, so even if the Upanishad, you read something in that, and if he says that okay, there is one Satchidananda Brahma Eke, there is nothing else, that's the only thing. But even if you read about it, but then you always apply your thought process. No, you evaluate that thing, that particular thought, which has come from either from a book or from someone has told you opinion. Someone else, there could be so many people, so they will keep on expressing their opinion. You evaluate it. Does that fit into my current context or not? Then that thought becomes the knowledge for me. How do I understand this? For example, there is you happen to go to visit a jail, right? You are conducting your prana or you are conducting your jail program, prison smart jo apna wo conduct kar rahe hain, and you happen to visit those criminals over there. Now we all have this knowledge about if you do the papa karma you will be going to narka, and if you do the punya karma you will be getting the good deeds, you'll get the good result of that. Now this has been said in Gita and we all have read about it. Now what is the purpose of you going there? To make them feel calm. No, they are already feeling guilty about it, whatever that has happened. So they are already in guilty consciousness. Your purpose is to make them feel uplifted that this is all right, this phase will also pass, you will go through it and you will be all right. That is our intention. And now if we go and tell this, oh, तुमने तो ये किया है, according to Gita you are going to experience this, जिस तरह के कर्म किए हैं अभी भुगत,
you do this, like you now you pay for that. You did the bad karma, now you are paying for it. This is what is there, this is what the knowledge is, now you pay for it. Does such sentence will uplift that person's consciousness? Will he feel comfortable? Will his guilt will be removed? Hmm? No, right? So that thought, even if it is come from something, so even if it comes from some holy scripture, that point of time, is that applicable to that context? No. Then that is not the knowledge. What is applicable that point of time? You explain, you console that person. You make them do some practices. You tell them that this time will also pass. See, everything is changing. This is not permanent. See, this body is changing. Making him aware about the truth, and then making him feel uplifted. That kind of thought process, that kind of things becomes the a real knowledge. So we need to, whenever this thought comes in our mind, we need to really see, is it applicable to my context? Whatever am I doing? No? Is it in line with my goal? Yes or no? Then you execute them. Otherwise, it's just clouds. That clouds are coming and then it's going. The same thing happens during meditation also. I am meditating now. Thoughts are coming. I don't bother to link them together and form a story or dream, do some fantasies. I just want to let go. Because my current goal is to meditate. I want to experience the samadhi. So what do I do with those thoughts? Just ignore them. Apply that filter. Let it go. Right? So that is the context that is very, very important here. Then the another thing that is explained, what is this pramana and all these things. So here we need to understand, see this knowledge that comes via two processes. No, one comes which is a parashakti. So those knowledge of Ayurveda, it is being said that knowledge of Ayurveda is not somebody wrote it and all that. They said that they just, all those Rishi Munis, they meditated, and in the meditation that knowledge was downloaded, and they did not even had that language in place, no, to write it down, and even that process itself didn't existed. So they kept on passing on that knowledge only orally. They used to tell all the shlokas to the person, explain it, and then they kept on passing it on. So this Ayurveda itself has the recorded history itself. It's Ayurveda is Anadi. But the recorded history of this Ayurveda itself is 5 to 6,000 years old, so year old, and still those principles are still valid. From where this knowledge came? From this where, so it all came in the meditative state of mind. Those thought came, which are vapyaye, and then they wrote it. Not wrote it, later it got converted into scripture, but then that is how the knowledge has come. So from where this knowledge comes? It comes from the Parashakti. That's a direct source of knowledge. And that direct source of knowledge is in abundance. There is no limit for that. And then the second source of knowledge is all this Aparashakti. So this Aparashakti, this all these things, comes all this four Vedas, Upanishads, Brahma Sutras, and then your Shruti, Smriti, no, then all Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita, Shiva Sutra, and then Narad Bhakti Sutra, and then your Bhagavad Gita, and then Mahabharata, no, and then Ramayana, Yoga Shishta, all these things, whatever the sources of knowledge, no, it all comes over there. That's the path of Aparashakti. Now, why it is important to understand this when we are thinking about moksha and when we are thinking about what is to be taken as a pramana in our life. No? So do we really have a time to go through this thing? No, it says that it takes 12 years to read one Veda. It takes 120 years to understand what is written there and practically implement it. So just for 4 Vedas, the 5 lifetimes is already gone if you live for 100 years. Otherwise, think about, there is so much of abundance of knowledge. For one person to attain one faculty, when somebody becomes a gynecologist, that person has to spend 23 to 25 years of his life in just becoming a gynecologist. And after becoming a gynecologist, if that son or daughter is suffering, he sends that to the child specialist. Bolte, nahi, I am not a specialist, go to them. How much can we know in this life? There is a limitation. Understanding that limitation, it is very, very important to
accept the pramana as the Guru Vachana. So once you have a Guru in life, he has something said, told you something, do this, without any filter, you just do. It is the Brahma Vakya. It is the Guru Vachana for you, and that's the final. That's it. Huh? Then if he has said something, all other what scripture said, what this says, what other people says opinion, doesn't matter. Your guru has told you something, that could be your pramana. Because we do not have time to evaluate everything, to go through it in our life. Oh, so that is where in practical life, either in a material life when you are doing other things, or in a spiritual life, it is very, very important to follow the path of this thought process. The vichara is very, very important. Good. So I'd like to open today's session for the discussion. If you have any questions, you are welcome to ask. Or if you'd like to contribute to today's subject, you can contribute. The rest, मोक्ष के चार द्वार पर में जो next two pillars बताए गए हैं, that we will see tomorrow. कल हम लोग उनको देखते हैं. Over to you all. Thank you, Someshwar ji. So we are very blessed that we have Kusumtai with us today. Kusumtai, namaste. Jai Gurudev. We would invite her to talk. आप आ सकते हैं, आप unmute कर लीजिए. हाँ, Kusumtai probably अपने, हाँ, Kusumtai is there, okay. Yes, she's there. हाँ, Kusumtai, please contribute, or whatever you want to say, please continue. नहीं, आप भी शुरू करें तो अच्छा है. नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं. उनकी रिक्वेस्ट है तो उसका सम्मान करते हैं. ये विचार ऍक्शन्स जे आहेत तर ते अग्र आहेत की उग्र आहेत, नम्र आहेत की विनम्र आहेत, या प्रतिसाद तो त्याला आपण रिॲक्शन प्रतिसाद जो देणार तो कसा आहे त्याच्यावर बरंचसं अवलंबून असतं. आणि हे जे आपण कर्म, भक्ती आणि ज्ञान जे सांगितलं, तर कर्म अभ्यासापेक्षा श्रेयवी ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासापेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ. श्रेयवी ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. आणि ध्यानात कर्मफल त्यागस, त्यागात शांतिरनंतर. असं हे याचा सिक्वेन्स आहे. अभ्यासापेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानापेक्षा ध्यान, ध्यानापेक्षा कर्मफलांचा त्याग. तर मग कर्मबंधन नाही, बंधन नाही बनत. तसंच हे विचारांचं जे आहे तर ते प्रतिसाद कसा देणार त्याच्यावर पुढचं कर्मबंधन येईल का नाही तर ते टाळू शकतो. How nicely explained by कुसुम ना, कुसुम भाई ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया. So यहाँ पे जो तीन बातें बताई थी ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, एंड इसमें हमने बताया था कि कौन सा यहाँ पे श्रेष्ठ है, उसका एनालिसिस करना चाहिए वगैरह वगैरह. एंड देन मैंने बोला था इसका डिटेल में डिस्कशन बाद में करते हैं, चर्चा. तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो इसमें इसको क्यों लड़ाते हो बेचारे को, दो अलग अलग है स्कूल ऑफ थॉट से, व्हाई यू वांट टू मेक फाइट देम ना. बोलते तीनों जरूरी है. सपोज आपने कहीं तो गए, आपको किसी ने कुछ गुलाब जामुन फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में दे दिया और फिर उसका ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया. वो आपने लिया, अपने कर्म किया, उसको उठाया, अपने मुंह में निवाला डाल दिया, तो उसको बहुत अच्छा लगा. गुलाब जामुन की याद आई तो संगीता जी के गुलाब जामुन की भी याद आती है. तो वो जो गुलाब जामुन है वो आपने अपने मुंह में डाला और फिर आपको बहुत मीठा लगा ना, तो उसके प्रति आपको प्रेम हो गया, माने आपको अच्छा लगने लगा, तो वो भक्ति योग हो गया. देखो कर्म योग किया, उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके प्रति निष्ठा हो गई, श्रद्धा हो गई, यानी भक्ति योग में आ गया. नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गुलाब जामुन आपके सामने आता है तो जैसे ही वो दिखता है, ज्ञान है क्योंकि उसके बारे में श्रुति भी स्टोर है, ज्ञान है, जैसे वो दिखता है मन में उसको खाने की लालसा आ जाती है. क्यों? बिकॉज आपके ऊपर उसके ऊपर श्रद्धा, माने भक्ति योग आ गया. लेकिन ज्ञान योग भी है भाई, भक्ति योग भी है,
आप जाके अपना कर्म नहीं करोगे, उसको उठाओगे नहीं, अपने मुंह में नहीं डालोगे, तब तक उसका फल आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं कि ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है। ऑल दिस थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट लाइफ। व्हाई यू वांट टू मेक द फाइट in that one? This kind of thought process is very important. But really, whatever Kusumtai have said, that is the ultimate, that you drop all the karma tyajyate, na? Drop all the fruits of the action, then you are anyway free, because you want to go move towards the liberation, you want to attain the moksha. It is very, very important that keep dropping all these things. Whatever the fun comes, don't grumble about it or don't be very excited about it. It's okay. Just accept it. Very nice question, Tai. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Yeah. So my takeaway is very short today. Each thought has to be, watched. That is the most important part, because that is the seed. And today where we are, आज हम जहाँ पे भी है, तो वो वहीं पे, वो जो हमने कल सोचा होगा कब, वो आज हमको मिल रहा है. तो आज हम जो न्यू सीड्स डालते हैं, वो हमारा फ्यूचर होगा. So we have to be a watchman of your thoughts. That is what actually it is. And the purification of the thoughts and the five types that we saw. So in that way, we have the purification. So again, those two things, impure and pure. So go towards the pure and you will reach your goal, right? So, and evaluate your thoughts. Yes, keep on evaluating how it is leading you to your goals, whatever you have it. So start observing your thoughts and be a witness. That's it. Thank you. Jai Gurudev. Jai Gurudev. We also have Sachinji with us. Sachinji, Yes. kind of. I think if anyone wants to speak before me, let them speak. I just want to say a few words. सोमेश्वर जी ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया. Our thoughts means whatever we think we becomes. So जैसे हम ये करते हैं, जैसे इनपुट रहेगा वैसे ही आउटपुट आएगा. तो जो हम फीड करते हैं अपने माइंड को, वैसे ही आउटपुट आ रहा है. तो वी शुड बी कॉशियस what we are feeding to our mind. So that is what Sangeeta ji has also highlighted. The another thing what I just want to say is that we need to retrospect and find out through our own life, are we really happy after doing all these things? So at every stage of life, your everything, whatever we have achieved or whatever we think we have in our possession, are we really happy about it? Are we really content about it? So that is the seed from where you will start growing towards a permanent happiness. So try to find out whether I am happy by this action. And you will see that from child to this, the mature age also, your mind has not changed much. It's the same thing, same craving, same desires, only objects keep changing, but the basic nature remains the same. So what is the point in acquiring all these possessions and these things? So that retrospect or that insight should dawn on you by reading scriptures, by listening others, by listening your gurus and this thing. This will lead to you towards permanent happiness. And in Gita only they say that Maneva Manushyanam Karanam Moksha Bandhayo. Mind is only the reason or the cause of your liberation or bondage. So that you need to see. This just like you have seen the silkworm, it casts the web around itself. So these are all these thoughts which we have casted ourselves. I am this, I am that, and this a person which has pulled up lot of clothes on him and forgot his own identity. This I am this body, I am this person, I am having this knowledge, I am this qualification, I possess this thing, I have this thing. So
So many things we have accumulated, but we have forgotten our real nature. And through that possessions only we interact with others. So other is also having the same perceptions about himself. So it is basically the interaction of perceptions. That is the relationships. So what I am saying myself, what other person is thinking about myself. So it's not real relationship on true sense. It's basically interaction about the perceptions. So that creates another chaos, and which leads to multiple things. So we need to understand, and I think that is the way, means to understand our real nature. Thanks. थैंक यू सो मच सचिन जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, यह चर्चा सत्र है। Here we all are here to do discussion about it. So whatever your takeaways, whatever you, सब लोग अपना अपना बता सकते हैं, प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं, it's okay. हाँ संजय जी, over to you. विचारों का एक सीक्वेंस पहले से जैसे चलता है, तो पहले अर्थ अनर्थ अनुबंध विचार, अभी आपने बताया, सचिन जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, संगीता जी ने, ये चर्चा है। तो विचारों की श्रृंखला, जैसे शुरू में विकारों से मुक्त होने के लिए जैसे जैसे विचार आते हैं, उसका स्कैनिंग के जैसा हो जाता है। हर विचार आता है तो अपने को पता चलता है ये विचार ऐसा है, ऐसा है, उसका एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वहां से। उसके बाद दूसरा विचार जो आता है उसका भी एक सीक्वेंस है, क्यों, ये शरीर नश्वर है, ये सब कुछ संसार है, अभी आपने जो बताया वही टाइप है। उसके बाद का विचार क्या बोलते हैं उसको, फिर वो और आगे बढ़ता है विचार। तीसरा विचार वो भी सीक्वेंस में ही है। चौथा विचार क्या, अपने आप को जानना फिर से, और उसका एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथों का आधार दिया है, एक संख्या शास्त्र दिया, उसके बाद अष्टांग योग साधना, अष्टांग योग दिया, उसके बाद कनाद ऋषि का दिया, मतलब इसका भी एक सीक्वेंस दिया। और फिर ऐसे विचार की हमारी भी श्रृंखला वैसे आगे बढ़ती गई, मतलब हमारी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को एक सही दिशा देने का काम यहाँ पे कर लिया गया है। एक मस्त सीक्वेंस विचारों को दिया गया है और वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा सुनने के लिए। जय। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक्स फॉर एक्सप्रेसिंग इट। मुझे एक जस्ट एक मतलब स्टोरी जस्ट एक बतानी थी। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक रोड पे कोई एक पागल है, वो अपने आप से बातें करता है, बड़बड़ करता है, चैटिंग करता है। वो और एक नॉर्मल पर्सन, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सिर्फ जो लुनेटिक जो पागल पर्सन है वो एक्सप्रेस करता है आउटवर्डली, और वैसे एक नॉर्मल पर्सन इनवर्डली चैटर करते रहता है। तो it's almost the same. We are continuously chattering in our mind, always contradicting or agreeing or this thing. So it is all our thoughts which binds ourselves. So he has beautifully commented on that. So I just want to highlight that. Very must analogy. That's very apt analogy. तो बोलते दूसरों की तरफ हम लोग देखते हैं, ये करते बोलते अपने अंदर भी तो वही चल रहा है। गुड दैट वी आर ऑल इन वर्क इन प्रोग्रेस। एक दिन तो पहुंचनी है, वो नहीं है भगीरथ प्रयत्न से गंगा को बुला लिया गया है, शिव के माध्यम से उसको बांध लिया गया है और गंगा भी छूट गई है ना। तो शिव जी वहां से निकल चुकी है, तो बस ये बह रही है ना, और फिर गंगा सागर में तो मिलना ही है एक दिन। तो अपनी सबकी स्थिति वही है, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो ये गंगा एक दिन गंगा सागर में मिलनी ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड देन फिर गंगा करती क्या है जब बहती है तब, अपने आसपास के जो भी लोग आते हैं उनको शांत करती है।
अपने आस जिस भी धरती से गुजरती है उसको सुजलाम सुफलाम करती है, पानी देती है, ग्राउंड वाटर को टेबल को बढ़ाती है, खेती में उसको उपयोग किया जाता है, कई लोगों के पाप को नष्ट कर देती है। सो बस अपना भी जीवन यही है ना, हम लोग वो शिव जी के इससे निकल चुके हैं गंगा सागर में मिलना है, लेकिन बहते बहते भी चुप नहीं बैठना है ना, बहते बहते भी जितना हो सकता है जितना शेयर करो। अभी मेरा आज ही वेलनेस टीटीपी खत्म हुआ, वहां पे बोलते यदि आपके पास कुछ आती है चीज ना, उसका पर्पज ही है कि आप उसको शेयर करो। अदरवाइज देखो ना, हमने इतना पराशक्ति अपराशक्ति की बात की, कितना नॉलेज है ना, कैसा ऐसा कौन सा तीर मार दिया है हमने कि हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो बोलते अपरा शक्ति से जो पराशक्ति से जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, have a reverence to that, have a gratitude towards that, and keep sharing it. It's been given to you to share, you cannot just keep it with you ना। आपको जो भी प्राप्त हुआ है जीवन में, हर किसी के लिए देखो, यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, यू आर वट एवर प्रोफेशन यू आर गृहिणी, इर्रेस्पेक्टिव देखो ना, सब वो गंगा की तरह निकल चुके हैं, है ना। तो वो उनका काम है बहना, रुकना तो है नहीं, कर्म रुक नहीं सकते, तो उनका काम है बहना और बहते बहते बांटना, जो भी मिला है उसको सबके साथ बांटना, यही है ना साथ। वर्ड से क्या कहते हैं आप लोग, है ना? गुड, ठीक है। सो फिर आज का सत्र, यदि कुछ किसी को बात करना है तो कर सकते हैं, या कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इट्स नॉट, देन हम लोग आज का सत्र इसको यहीं पे रोक देंगे। फिर मोक्ष के 4 द्वारपाल जो है, शम, विचार, संतोष एंड साधु संग, इसको कल आगे बढ़ाते हैं। 2 तो हो गए अपने, शम कल देखा था, आज हमने विचार देखा, कल हम लोग बाकी 2 पे बात करेंगे। विद दैट नोट, जय गुरुदेव।